थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें मौका दिया बातचीत करने का। तो हम सर इस चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं कि जो फूड वेस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे या सोशल पे या जो हमारे इकोनॉमी में जो फैक्टर है उसके ऊपर वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो इस सिलसिले में हम सर चाह रहे हैं कि आपकी राय जो है सुनें और सोल्यूशन भी कुछ आप सजेस्ट करें क्या हो सकता है। हमारे यहाँ जी फूड सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज है और फूड सिक्योरिटी जो है वो हम समझते हैं कि वीट सिक्योरिटी उसी को हम समझते हैं। वीट की हमारी वेस्टेज है अबाउट 17 to 20%। सबसे ज़्यादा क्लोसल लॉस है हमारा फ्रूट का, अराउंड 50% लॉसेज होते हैं फ्रूट में, इवन मोर, especially किन्नू। And similarly, we have traditional methods of harvesting of rice or other crops. There we also encounter losses. Though in the rice, there are not much losses, about 10 to 12%. And we have self-sufficiency in corn, but still we lose a lot of corn. One thing which I would suggest is, and we did do it while I was the cotton commissioner, that there was a wheat shortage in 1997. What we did, we take 5% corn, 10% corn, 15% corn, 20% corn, and 25% corn. We mixed this with wheat flour and we made chapatis. We took it to the Standing Committee of Agriculture, National, and we gave them those 5-6 chapatis each, and then we asked their opinion, the MNAs. They said that the best chapati is with 25% corn. So if we can mix 25% corn with wheat, we have food self-sufficiency. However, in our surrounding, they are getting 4 tons per hectare or 4.5 tons per hectare wheat. We are getting only 2.5 hectare per ton per hectare. So there is a lot of scope if we raise about 5 to 6 months in our 28 whatever we got this year. I don't know whether we will meet the target or not, but roughly 25 million tons we get it. And if we add another 25 or 6 months per acre, we can get food self-sufficiency. But we have a lot of leakage. Traditionally, 1 million ton is smuggled to Afghanistan. Afghanistan is a food deficient nation. They have about 2 to 3 million ton shortage. So they take our wheat on donkey backs and whatever means they want. I went to Uzbekistan in '96 and I found Pakistan atta in Uzbekistan. So atta is even smuggled. And problem is with our powerful syndicates like APTMA, Sugar Mill Associations, REAP, राइस की जो है, और फ्लावर मिल एसोसिएशन. They are very powerful people. Ministers are all toothless, both agriculture at provincial level and federal level. They have no say at all in the policy making. It is the Ministry of Finance and Commerce and Production who decides all the matters. So, in my opinion, we can reduce fruit wastage through cold storages. We need cold storages. And I tell you that we have open storage for wheat, schools, buildings, etc., etc.
they hire. We have only 2 million tons covered storage. The rest they rent in the schools or other buildings where we have encountered losses. And our departments are rent seekers, especially the food department. Uh, we are not shortage of wheat. I think something is wrong over here. Take the case of Punjab. Punjab has 120 million people, right? And if you take, say, 25 wheat per capita, our wheat comes to about 15 million ton requirement of Punjab. But we are producing plus 20 million tons of wheat. Why do we need storage? People have their own storage. There's no food shortage in Punjab at all. We feed to the deficit provinces like Balochistan, like Sindh, about 5 to 6 million tons of wheat. We are storing for other provinces. And also, our food department is thoroughly corrupt. Let alone there are 700 flour mills in Rawalpindi. Why? Rawalpindi is not a wheat area. Reason being it's closer to Afghanistan. They can easily smuggle it. And most of the mills are over capacity. Sugar mills as well as wheat flour mills as well as rice flour, they are running it under capacity. They don't have capacity to fully run. And government is storing for flour mills. Why? In Punjab, if we have extra wheat, people have their own wheat. They don't need from Punjab government. Why we are storing for them? So we are helping the deficit provinces, but they should take care of that. We need to increase our productivity. Our marginal productivity of labor is 0. जब हम कल्टीवेट करते देखो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट. इन चारों के शेयर होते हैं, ठीक है ना. लैंड का अपना, लेबर का अपना, कैपिटल का अपना और एंटरप्रेन्योर का अपना. एंटरप्रेन्योर इज़ द वन जो इन तीनों को मिलाता है. अब ये जो एंटरप्रेन्योर है, व्हीट फ्लावर ओनर, शुगर मिल ओनर, they are mean and rapacious. They do not look after the nation interest. Their interest is self-interest. That their shoe should be shining, not for others. So they should realize, neither खाना ज़ाया होता है हमारे यहाँ, तो उसको जो है ना वो माशरे पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है या माहौल पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो या हमारा जो है वो किस तरह से जो इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो क्या हमारा. It's a very good question. It's a very good question. We have a lot of wastage on marriages. People don't eat, and plus these hotel people reuse those food as well, which causes problem for our health. And I think we need to educate people that you should take care of the waste. If you have 100 guests, you make food for 200. Why? So you should realize that this wastage will either the hotel people will keep it, or it will go waste. The other thing is that if we ask the Deputy Commissioner to enforce
laws on it. There is a law to enforce it, but they don't do it, because they grease their palm, and we need to have strict administrative measures. Plus, we should educate them on the TV and media that we should not waste our food. Food is very important item, and we are shortage of food. Look, बच्चे घास खा रहे हैं सैलाब वाले, तो ऐसा है। तो सर इसमें कुछ आप क्या रिकमेंड करेंगे जी कि जो फूड वेस्ट हो रहे हैं उसको कैसे पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है, रिसाइकलिंग उसकी की जा सकती है, या कैसे उसको पॉजिटिव वे में कंट्रोल किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है? रिसाइकलिंग तो कुछ रेफ्रिजरेशन कर लें तो ठीक है, वरना रेफ्रिजरेशन वाला फूड हम खाते नहीं हैं पाकिस्तान में ना, स्पेशली फ्रेश फूड खाते हैं, तो वो वेस्ट ही जाता है इवेंचुअली। तो अगर हम अपना कंपैरिजन करें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो उन लोगों ने कैसे ये वेस्टेज को कंट्रोल किया, क्योंकि वहाँ पर सेरेमनी एजुकेशन तो एजुकेशन किस तरह की एजुकेशन सर आप समझते हैं कि देनी चाहिए लोगों? मेरा पोता है ना, वो ये टिश्यू जो है ना नहीं फेंकेगा, यहाँ ट्रैश में फेंकेगा। It started from home till in the offices, wherever we have to educate our people for cleanliness, for they never waste food. Whenever we used to invite them, we put so much food like Pakistani and America. So they say that much food, and they just cook whatever they want to eat. वेस्टेज को कैसे रोका जाए, या कुछ एजुकेशन में कंटेंट शामिल होना चाहिए, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है एजुकेशन में तो डेफिनेटली कंटेंट होना चाहिए, और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अमंग मासेस, और ये जो अनऑथराइज्ड होटल्स हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए कि एक तो वो बड़ा सिक फूड जो है या स्टेल फूड जो है वो सेल करते हैं, मिलावट करते हैं। इन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई तो है, वो उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको फायर करना शुरू कर दिया ना। तो वी आर द विक्टिम ऑफ एलीट कैप्चर। एलीट जो है ना वो चाहता है कि बस मेरा शिमला ऊंचा हो, दूसरे का ना हो। एलीट कैप्चर से ये है कि देखो आयशा थी एक डिप्टी डायरेक्टर फूड, इतने उसने लाहौर में छापे मारे, इवेंचुअली उसको ट्रांसफ़र करा दी। बड़ी अच्छी हमारी स्टूडेंट थी वो। तो फिर ये डिप्टी कमिश्नर जो है ये अमृत दारा थे, अब कोई CSP डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी लगा हो तो वो काम नहीं करती। दे आर बाबूस, एंड अंग्रेज़ जो है उसने हमारे पीछे ये जो लेगेसी छोड़ी है वो रूलर छोड़े हैं, सर्वेंट नहीं छोड़े। तो सर आप जो यूथ है उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे ये फूड वेस्टेज को रोकने के हवाले से, कि क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं, ये क्या उन्हें करना चाहिए? ये जो हमारा है अपना सोशल मीडिया, that can help a lot, especially youth are using it, and we have educational programs on this social media that might help a lot. तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी प्रैक्टिस ज़रा इंट्रोड्यूस कराएंगे कि जिससे लोगों को ये भी एजुकेशन मिले, कि कोई ऐसे सेमिनार्स वगैरह या कोई इस तरह के इनिशिएटिव आपका लेने का प्लान है जिससे? We have a great plan, but still we are in infancy, budding stage पे हैं, तो we have lot of teething problems, और फैकल्टी के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना और मैनेजमेंट को पढ़ाना, there are so many factors which we are encountering. Once we have students
because university is the students and the teachers. Without that, there is no university. ठीक है ना? जब स्टूडेंट आएंगे, उनके प्रॉब्लम्स होंगे, तो उनसे हम फेमिलियर होंगे। फेमिलियर तो हम हैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम से, लेकिन हर तालिब इल्म का अपनी अपनी होती है। डिपार्टमेंट अभी हमने चलाया नहीं है, बट वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट दिस डिपार्टमेंट, फूड साइंस डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया।